छिड़ी हुई है हाथ की उंगलियों में लड़ाई, चारों कर रही हैं अपनी महत्वता की अगुवाई। मध्यमा बोली, मैं हूं महान, कद में मैं ऊंची, तुम करो सम्मान। हो तुम मेरे पहरेदार, मेरी रक्षा तुम्हारा है काम। कनिष्ठा बोली, जरा करो नमस्कार, मेरे पीछे दिखते हो तुम चार। कद में चाहे मैं छोटी हूं, लेकिन प्रथम मैं आती हूं। कनिष्ठा पर हंसती अनामिका, बोली, मैं हूं सौंदर्य की मलिका। मुझ पे चढ़ता अंगूठी का ताज, रिश्तों को मिलता मुझसे नाम। नाम के तर्क पर तर्जनी बोली, मुझसे उपयोगी तुम में से कोई नहीं। मैं दर्शाती, मैं दिखाती, आदेश देना है मेरा काम। इसीलिए मैं हूं सब में महान। चुपचाप अलग किनारे बैठा आया अंगूठा, किया सवाल, क्या कभी है तुम सबने सोचा, मेरे बिना क्या कोई काम होता। न उठा पाते कोई सामान, न नल बंद करना होता इतना आसान। खिसिया के अंगूठे से बोली उंगलियां, क्या तुम्हें लगता है तुम हो महान। अंगूठा बोला, न मैं हूं महान, न तुम हो महान, हमारा साथ ही है हमारा अभिमान। जो न होता हम में से कोई पांच, तो नहीं बन पाता सुंदर हाथ। Together we can and together we win. With this hope, we are pleased to introduce today's webinar. We heartily welcome each and every one present here. Before we start, I would request everyone to post your questions and queries in the chat box. But please, it's a humble request, post necessary things. I repeat, please post necessary queries. Thank you. Namaskar, bonjour, Sat Sri Akal, hola, namaste. As conveyed through the poem, when we all come together, success and change is assured. Every small action matters because when 7 billion people do that thing, it changes the world. Do you know? Today, the whole world is observing International Volunteer Day, mandated by the United Nations General Assembly. It is held each year on 5th December. It is viewed as a unique chance for volunteers and organizations to celebrate their efforts, to share their values, and to promote their work among their communities, non governmental organizations, United Nations agencies, government authorities, and the private sector. So many different volunteers together are bringing change in the world. I'd like to take a moment to thank all the volunteers at the front line of COVID 19 response, addressing the challenges posed by the pandemic, making sure everybody is safe, and being there for people and the planet. Thank you once again. Can we all clap for them together? Very good. We all are here to bring positive change just like them. Are you with us all? Great. Can you hear the enthusiasm in my voice? I'm trying to hold in my excitement for the special person who's about to join us all. मन की बात करने वाले, हर किसी के मन के सपनों को सुनने वाले, सुनहरे आने वाले कल का सपना हमारे साथ बुनने वाले. Can you guess who's with us? Yes, we have Mukesh sir, the Prime Minister, the Principal of DPS Varanasi, the multi-talented, multilingual, devoted personality who is amidst us playing the role of Prime Minister Modi ji to convey the message of SDG. We welcome you, Mukesh sir. नमस्कार। मंच पर उपस्थित पुष्पी जी, अनुपमा जी, सारे लोकेशंस के शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, बाबा काशीनाथ, काशी विश्वनाथ की नगरी से
मेरा जय हिंद स्वीकारें और एक साथ, जैसे काशी में बताते हैं, हाथ ऊपर करके हम हर हर महादेव का रटन करें। मेरे साथ आप बोलेंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। आज एक बड़ा अहम विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, काफी मन की बात में हमने ये आपसे बताया है, या संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी हमने ये बताया है, दोहराया है कि हमारा देश करीब 5000 साल संस्कृति वाला पुराना देश है। उस दौरान ऋग्वेद के जो ऋषि मुनि थे, हमारे आज ऋषि का मतलब है साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट्स ने, वेदर वो सोशल साइंटिस्ट हो या वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो, उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था कि सारा विश्व एक परिवार है। पूरा वसुधैव जो है ये एक कुटुंब की तरह है। तो आज सुनंदा जी ने बहुत सुंदर से आपको समझाया कि 5 उंगली अगर इकट्ठा होती है तो ही एक सुंदर हाथ बनेगा। इसी तरह अगर हमें एक बहुत सुंदर भूमि बनानी है, सुंदर देश और दुनिया की अगर रचना करनी है, तो सारे देश इकट्ठे होके एक मुट्ठी की तरह अगर काम करेंगे तो शायद पर्यावरण बचेगा, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हम छोड़ के जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सतत विकास करना। हम सब लोग सुनते आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये हमारा जो मंत्र है, ये हमारे पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ श्लोक है जो हम रोज, जिसका हम रटन करते हैं। हम हमेशा पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हम संस्कृत में कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। या फिर उपनिषद का एक वो मंत्र ले लें जहां हम कहते हैं कि कुदरत के साथ हम शांति बनाए रखें, हम संतुलन बनाए रखें। द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोखदः शांति। तो इनका मतलब यही है कि पहले से हमारे इस देश में ये सोच रही है कि एक साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो ही दुनिया की उन्नति होगी, और अगर दुनिया की उन्नति होगी तो मेरी उन्नति होगी। कहीं ना कहीं हम बीच में भटक गए थे कि उन्नति सिर्फ मेरी हो, बाकी लोग की उन्नति हो या ना हो, बाकी लोग भाड़ में जाएं, मैं आगे बढ़ूं, आई बिफोर एवरीबॉडी। ये जो एक मंत्र था डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक गोल्स का, वो आज दुनिया में उन्हें सोचा जा। और संयुक्त राष्ट्र ने कुछ सालों पहले एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे चर्चा करने के बाद 17 गोल, 17 लक्ष्य, 17 आयाम कायम किए हैं जो अलग 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 डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। बेसिकली है प्रकृति का डेवलपमेंट, क्योंकि हमने आज प्रकृति का बहुत बहुत शोषण किया है। हमारे इंसान का ईगो भी देखिए ना, हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट अस प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मुझे हंसी आती है जब ये कहा जाता है कि वी आर पीपल हु विल प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमारे शास्त्र में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी तरह अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। और हमने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया है बहुत सालों से। बापूजी की एक वाक्य याद आता है मुझे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड। मतलब हमारी जो लालच है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के जो लोग हैं उनकी जो बेसिक जरूरत
है, रोटी, कपड़ा और मकान की, तो उसके लिए प्रकृति में बहुत बहुत चीज अवेलेबल है हमें। तो आज इस चर्चा के बाद हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पर अध्ययन करें, और हम ये मानते हैं कि इस दुनिया को हमने आप लोगों से, मेरे जो आज बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों से हमने ये दुनिया उधार ली है। तो जब हम इसका जाने से पहले आपको जो चुका के जाएंगे, आपके लिए जो छोड़ के जाएंगे, ये उम्मीद करते हैं कि हम जो आपसे लिया है उससे कुछ बेहतर हम दें, क्योंकि जब भी उधार चुकाते हैं तो इंसान सूद के साथ चुकाता है। तो हमें वो सूद के साथ चुकाने के लिए ये आज प्रयास हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। हमारी सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियां कायम की है जो इस गोल्स के साथ जुड़ी है। आपने उज्ज्वला योजना के बारे में सुना होगा, आयुष्मान भारत के बारे में सुना होगा, मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा, और भी कई हमारी स्कीम्स हैं जिसका आप थोड़ा सा स्टडी करें और उसको इन 17 डेवलपमेंटल गोल्स के साथ लिंक करके आगे हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारें। वो कहते हैं ना कि 1 मील की दूरी तय करनी है हफ्ते में, तो शायद रोज 10 कदम चलना पड़ेगा। तो वो 10 कदम हम चलें, मैं 10 कदम चलूं, आप 10 कदम और चले, तो कहीं ना कहीं हम इस पूरी दूरी को, जो है इतनी लंबी दूरी को, आराम से हम तय कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज आप लोग घर में ऐसा करें। मान लीजिए बिजली बचानी है, तो ये सोचिए कि आप बिजली कैसे बचाएं। गैस घर में जो इस्तेमाल होता है, वो क्या हम और उसको लंबे समय तक इस सिलेंडर को चला सकते हैं? 2 कमरों में अलग अलग बैठ के बिजली चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो क्या हम लोग इकट्ठा बैठ के नेटफ्लिक्स पे शायद सब लोग एक फिल्म देखें, ना कि मैं अलग देखूं, आप कोई और अलग देखे, घर में कोई और अलग देखे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज अगर आप सोचेंगे, तो खुद आपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आपको मिलेंगी, जो करने से शायद हम हमारी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो राह है, जिस राह पर हम चलेंगे आज से, उस राह की जो दूरी है वो हम बड़े आसान से, आराम से तय कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन सारी चीजों को और हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका अध्ययन करने करेंगे, और इसको कैसे लिंक और इसको आगे हम कैसे बढ़ाएं अपने डे टू डे दिनचर्या में, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। और जाने से पहले एक बार हम बोलेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। बहुत धन्यवाद। We request all the questions that we have to post in the Q&A section. Thank you.
To achieve our sustainable development goals, we have some explorers. Let's get used to them. Hi friends, I'm Eklavya. Do you know me? No? Okay, I'm going to tell more about myself. You know, my nose and my ears are the two magical powers with me that always makes me strong to fight with many problems. My sensitive nose understands how others are feeling so that I can do whatever it takes to help them. And my magnificent ears help me to listen each one problem carefully and to understand their challenges. Now, after listening and understanding the problems, I roll up my sleeves and digs into the experiences and learning to see how I can help them. My ideas and words can make people happy and feel safe. That makes me smile always. So, I want you all to join my team to make this world a happier world for each one. Hello there. I'm Curiosity, Jigyasa. I love to investigate the world around me. I scurry around the globe discovering new ideas. My pencil is a curious shape. It reminds me to always be curious and keep searching for answers to all the questions. Are you curious like me? Let's find out the solutions together. Hi, I am Puru, the problem solver. Puru loves to explore challenges. Her incredible spotted markings are always changing. Every time she solves a problem, another marking develops as her knowledge grows. Some problems are big and tricky to figure out, but as her markings change and she grows, she will solve even more. So, all my young minds, come and explore. Hi there, creativity is one of the superpowers that can help you become the best version of yourself and make the world a better place to live in. The great thing is that everyone has the power to be creative in their own way. Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, making mistakes, and having fun. My name is Kriti. I consider myself as a true explorer. I zoom around the world on a mission of discovery. My special tool belt that you can see here powers my creativity. With my pens and pencils, I try to create a better world. Do you know that the best ideas can develop when we work together? Ask questions and spark ideas. Are you ready for these? Communication is a superpower that connects the people of the world, be it different castes, different cultures. People from all walks of life can come together due to communication. All problems can be solved with the simple tool of communication. I am Komal Communication. I hear the stories and messages of people all over the world so that we can all work together. I have amazing ears. I listen carefully with them to what people are saying so that I can understand what they need and what I can do to help to bring together the different goals of sustainable development. So, kids, now that you have met all the explorers
It is time to find which explorer you relate yourself to. Please find the Menti link in the chat box and choose your explorer. You need to be fast. Wow, that is pretty quick. It's really amazing to see all the explorers vying for their own perfect one or chosen one. Thank you so much for taking so much interest. Now let's take a sneak peek into what SDG is all about. Which goals we want to meet by 2030? Have a look. Now let us see all these 17 goals. We want that a world should be free from poverty, hunger. Everyone should have access to good health, well-being, and quality education. There should be gender equality, clean water and sanitation. Affordable and clean energy is a right to everyone. Every country deserves decent work and economic growth. Sustainable Development Goals ask us to focus on industry, innovation, infrastructure, reducing inequalities. We should aim to have sustainable cities and communities, to have responsible consumption and production, a wonderful climate to live on. Oh, how can we forget aquatic animals, plants, our life on land, peace, justice, and strong institutions? Last but not the least, what is required to achieve these goals is a great partnership. So, all my young explorers, are you ready to join us? Wow, this is a day full of surprises. There are many youth icons who are already working on this mission. Now, let us see who has come to meet you all. Hello, my name is Malala and I'm from Pakistan. We have a very urgent mission to complete by 2030 and you can help us. Together, we must fight inequality, end extreme poverty and respect our planet. I'm determined to do this. Are you? Ma'am, you're on mute. Ma'am, please unmute yourself. Last
Now it's time to reflect. Reflect about what you just saw in the video. And write in one sentence about your experience. I also have a question for you. What do the global goals mean to you? Use the Padlet link to express your opinion, views, or to write your answers. Click on your school Padlet link to write your views. You have 3 Padlet links, each for different schools, one for Nasik, one for Varanasi, one for Nagpur. Click on your school link and express your views. Wow. I hope you are all putting in your feedbacks. It's in your chat box, my dear. Click on the respective links, you will be able to enter. I hope everybody is able to access it. Yes, ma'am, they have started writing. You must appreciate their enthusiasm. Wonderful. Yes, absolutely wonderful. We are so happy that all our explorers are taking such a keen interest in having all our goals fulfilled. Thank you so much, children. It is indeed wonderful. If you want to know more about the Sustainable Development Goal, we are also going to share a video for the same in your Google Classrooms by your respective class teachers. Those who are facing some problem, don't get disheartened. They can use the chat box also, ma'am. They can use the chat box. They can mention. Yes, you can use the chat box to mention. The ones who are not able to access, please make sure you're accessing the link to your school. You might not be able to access links for some other school. If you're from Nashik, you might not be able to access for Varanasi. So please try the link for your own. You need to click on your own school link, otherwise it will not work. We appreciate the way you all are participating, kids, and it is really wonderful. And now, when we have realized what the global goals are, let's find out the way to achieve them. No one else can do it than you. Yes, you can do it. कोशिश कर, हल निकलेगा. आज नहीं, तो कल निकलेगा. अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा. मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा. मेहनत कर, पौधों को दे पानी. बंजर में भी फिर फल निकलेगा. ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे. फौलाद का भी बल निकलेगा. सीने में उम्मीदों को जिंदा रख. समंदर से भी गंगा जल निकलेगा. कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की. जो कुछ है आज थमा थमा सा, बायकीनन चल निकलेगा. कोशिश कर, हल निकलेगा. अरे भाई, आज नहीं तो कल निकलेगा. And with this belief, when we look at ourselves, we can find that everyone among us have a superhero. Do you believe in superhero? Who is a superhero? Do you have any idea about it? Whom we can call a superhero? I think the one who takes responsibility to bring change. Who is a superhero? Okay, God, and why am I wonderful? I think the superhero is one who recognizes the hidden superpower he or she has. So, let us find out your superpower. The superpowers will help all of us
as a team to achieve our SD goal. I request for the next slide. Here you can see that we have something for you, an interesting activity. Be a superhero. Who doesn't want to be? We all want to be a superhero. We all want to do something very wonderful. So it is the time to check your chat box. Yes, please check. One more link is on the way. Correct, Anish? Everyone is superhero because we all have the super qualities within us. So if you can check the chat box, in that you will find a Wakelet link. There's a Wakelet link in a box. Click on it and you have to add an image of your drawing. Here I would to request for the next slide. An image showing yourself with a superpower. Yes. Take a sheet of paper, use lots of colors and make as possible. What you need to do? You draw an image which show yours. It cannot be done within few minutes, no? Don't worry. Hurry. Take your time. You can complete and submit your drawing in the Wakelet by 8 p.m. tomorrow. By the way, do you know how to use Wakelet? Of course, you all are smart kids, so you know that. But still, I would like to tell you in very short, if you are using phone, you can go on Wakelet with the help of app. If you're on PC, it may ask you to log in. Don't worry, just log in with your school mail ID. When you will enter in the Wakelet, you can see a plus sign over there. Click on it and you can insert the image of your drawing. It's so easy to do. We all are eagerly waiting to see our superheroes with their superpower. So please don't forget to do this activity. You can have a screenshot of the screen which is giving you information about the Wakelet. The code is mentioned over there. Even the Wakelet link is mentioned over there. Do insert the images by tomorrow evening, 8 p.m. Okay? We all are eagerly waiting to witness your superpowers. And you know, when you will introduce your superpowers to us, we will have superheroes who will surely step in to achieve sustainable development goals by 2030. On this note, I would like to invite Kajal ma'am to help us to take a pledge, and we will join hands to create a better world for us and our future generations. Kajal ma'am. Now let's take the pledge. I support and promote the principles of SDGs. I support and promote the principles of SDGs. I contribute to the achievement of SDGs. I contribute to the achievement of the SDGs by ensuring that all the activities I do are environmentally sustainable and socially inclusive. I support and encourage to promote SDGs. I support and encourage to promote the SDGs. I promise to make our earth well equipped for the future generations. I promise to make our earth well equipped for our future generations. I pledge to join the global movement to achieve the SDGs by 2030. I pledge to join the global movement to achieve the SDGs by 2030. I hope you all have enjoyed today's session, and we all are going to keep our promise that we have made just now in the form of an SDG pledge today. Am I right, my future explorers? Yes, are you all with me? You may type in the chat box, yes. Are you all excited? Yes.
There were some questions in the chat box. I just wanted to take up two questions that I liked. I must appreciate these two children. This is Arya Vadichar. I'm so sorry, dear, if I'm not able to pronounce it properly. It's Arya. How can we stop a child from begging? This was the question she asked. So here you can use the chat box. Children, use the chat box and mention, what do you think? What is your suggestion? How can we stop at your level? Yes? Children, I'm waiting for your responses. This is a question from one of your friends only. How can we help? Sunanda ma'am, please repeat the question again. Yeah, the question that Arya asked was, how can we stop a child from begging? So I'm requesting anybody, like children, they can think about that. If you find, yeah, okay, I'm getting some questions. Ma'am, how can we stop child labor? Okay, some questions, some answers are coming by coming together. Okay, yes, but yes, we can help by promoting, by giving them education. Yes, we can help them by providing them. Sometimes it happens that our house helpers, they need some support. We can support. We can start from our home only. Act locally, think globally. Yes, at your level, if you can do it. Yeah, good, wonderful. Now the one more question was that, how can we stop wastage of water? And this question was asked by Anshul Panbude. So he asked that how can we save or stop wastage of water? So may I have suggestions from my future explorers? Yes, by rainwater harvesting. Wonderful, very good. Yes, by storing it. Yes, conserving. We need to conserve, because conservation means we are, yes, judicious use is very, very important. Wonderful, children. And I'm really very happy to see my children, they are ready, with basic information, and now they'll be able to take this SDG forward. And you all deserve this, clapping. Thank you so much, children. Thank you so much for your wonderful responses. Yeah. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद न हो दोस्तों, कोशिश यह होगी कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मुझे पता है मेरे बच्चे आज जो अटेंड कर रहे हैं एसडीजी, वो जरूर कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक मजबूत टीम बना ली है और ये टीम पूरे जी जान से दुनिया की सूरत बदलने की कोशिश करेगी। हम सबकी ओर से मैं अपने प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और स्नेह देती हूँ। मैं आपके उत्साह की प्रशंसा करती हूँ। आशा करती हूँ कि हमारी अगली मुलाकात, अब हमारी अगली मुलाकात कब होने वाली है? ये होगी 19 दिसंबर 2020, 19th December 2020. Yes, you can see here on your screen it's mentioned, and the same timing 4 to 5. बस एक चीज आपको करनी है, आप उस वेबिनार में उन दोस्तों को भी आने के लिए प्रेरित करेंगे जो आज किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं। We are going to do something very exciting. We are going to talk about good health and well-being. अगली वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आप अपनी इनबॉक्स को चेक करते रहेंगे, उसमें आपको मिलेगा। And please ensure that you are registering using your DPS ID only. And one more thing, you will have to carry some white sheets and colors. We may have some activities for you all. अंत में मैं सभी गणमान्य सदस्यों, अभिभावक गण, शिक्षक गण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।
हम आप सबका सहयोग हमारी शक्ति है। शुभ संध्या, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। मत भूलिएगा 19 दिसंबर 2020 4 से 5। थैंक यू एंड हैव अ फ्रूटफुल डे।